Hello and welcome to a special milestone edition of the CSR podcast. I am Sudeep. नमस्कार, मैं हूं प्रीति। CSIR पॉडकास्ट के इस 25वें खास एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। Preeti ji, do you remember we recorded our very first episode with a simple mobile phone and with a very small team? बिल्कुल सुदीप, मुझे याद है हमने एक छोटे मोबाइल फोन से शुरू करके और अब सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए हमने एक स्टूडियो सेटअप कर लिया है। Along the way, we have introduced better production, interactive quizzes, new ways to engage with our audience. बिल्कुल सुदीप, हमारी ये 25 एपिसोड की यात्रा सफल हुई हमारे श्रोताओं के सहयोग से और हमारी छोटी सी टीम के सहयोग से। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे नियमित श्रोताओं को जिन्होंने हमें इस कामयाबी तक पहुंचाया। As we celebrate this milestone, we remain committed to our listener to bring more new ways to engage them with us. बिल्कुल सुदीप, आज के इस विशेष वीडियो संस्करण में हम आपके लिए लाए हैं CSIR की महानिदेशक के साथ एक खास बातचीत, सप्ताह भर की प्रमुख झलकियां और CSIR पॉडकास्ट टीम की एक छोटी सी झलक। It's our privilege to welcome the Director General of CSIR, Dr. N. Kalaiselvi ma'am, for these special conversations. Thank you ma'am for joining us. धन्यवाद मैम, आपका CSIR पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है और आपका आज हमारे साथ होना हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायी साबित होगा। Ma'am, how do you see the importance of science communication in today's world? First of all, thank you very much for this great opportunity and appreciations to the entire team because you are successfully doing this podcast for the several months, and I believe this is the 25th one. Hearty congratulations to the entire team of SCDD. How science communication is important in the present day is very, very crucial because today, whether it is weather or agriculture or the market trend or the fashion or the style or the economy or even the lifestyle, whichever way you just want the human beings and the society to understand the current trends, it is only the science. So science acts as the window, and therefore this science communication, it acts as the important channel and it acts as the launch vehicle by means of which whatever is happening in the lab, how it is getting translated to its real-time application, this media and this channel and this launch vehicle as science communication is the best tool. मैम, आपके विचार में CSIR पॉडकास्ट जैसी पहले वैज्ञानिक अनुसंधान और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने में क्या भूमिका निभाती हैं? I think this is a real good question because normally scientist means well within the closed door. Researchers do research, and those who are outside this laboratory in the real world, they may not be knowing what's happening inside this laboratory. Though many things relevant to the society is only happening inside the laboratory, now it becomes our duty, and it's a pleasant duty for ourselves to come out of our shell and to say that we are working only for you. We are taking into consideration of your issues, your concerns, your challenges, your problems and your critical issues as our problem statements, and we think on behalf of you, we work for you, and at the end of the day, my scientific presentations and my scientific findings will definitely benefit you either directly or indirectly. So in that way, this podcast is the media, the via media, by means of which we can make the entire society to understand that we are working for them only. Ma'am, as we are celebrating this milestone episode, what will be your message to our listeners for the next 25 episodes? First of all, I should really thank all the listeners because with the kind of encouraging remarks and the responses we get, we are able to go ahead further. And I'm sure with the kind of encouraging responses we receive, it is our duty also to commit more to the listeners. Maybe so far you people were doing it only in the audio mode. Now you can bring in a few more interesting dimensions. You can make it visual,
and in whichever way you can bring in, maybe showcase a few models also along with the speaker who explains the science. If at all you are able to bring in some new dimensions, I think listeners will really feel and they will feel good, and they will take it as a great opportunity also. Thank you, ma'am. Thank you for sharing your valuable insights and words of encouragement. Thank you for joining with us. थैंक यू मैम. Thank you. Preeti ji, now let's take a look at some of the major achievements and developments from across the CSR labs during the past weeks. Over to Sanjay ji and Suparna ji. Thank you, Sudeep sir. Hello and welcome back to the 25th episode of the CSIR podcast, a milestone built on curiosity, driven by discovery and powered by innovation. I am your host, Suparna. नमस्कार, मैं हूं संजय. आज CSIR के इस पहले वीडियो पॉडकास्ट के माध्यम से हम अपने दर्शकों से जुड़ रहे हैं. यूं तो हमारा आपका साथ 24 हफ्तों पुराना है. सच कहूं तो ये सफर काफी रोमांचक रहा सुपर्णा जी, और इस हफ्ते भी CSIR में काफी कुछ घटा है. चलिए बिना देरी किए इस हफ्ते की प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं. तो पहली क्या खबर आप बताने जा रही हैं? It's been really a busy week for us. From where should we start, संजय जी? तो शुरुआत करते हैं महिला वैज्ञानिकों से. सुपर्णा जी, CSIR ने हाल ही में एस्पायर शक्ति कार्यक्रम के जरिए उनके उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया है. ये महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत उदाहरण है. Right, and they officially released the CSIR Aspire Compendium, which is a great record of all that hard work. बिल्कुल, इस कार्यक्रम से महिला वैज्ञानिकों का योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है. And the impact is clear. जी हाँ, ये जानकर अच्छा लगा कि CSIR एस्पायर योजना के तहत अब तक 301 महिला शोधकर्ताओं को मदद दी जा चुकी है. That's an impressive milestone. Now moving on to some big international news. जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ी खबर है. Exactly. CSIR has officially partnered with IP Australia. It's all about protecting our traditional knowledge. ये बहुत ही अहम कदम है सुपर्णा जी. आप तो जानते ही हैं, भारत पारंपरिक ज्ञान का भंडार रहा है, और इस परंपरागत ज्ञान को गलत ढंग से पेटेंट से बचाने के लिए CSIR TKDL एक ढाल की तरह काम करता है. And now that protection is going global. बिल्कुल, इस नई साझेदारी से इसका दायरा और भी मजबूत होगा. Also in the CSIR Aroma mission, CSIR CMAP has set up a new lemongrass unit in Ernakulam. और ये यूनिट बहुत खास है क्योंकि यह एलिफेंट कंपैटिबल फार्मिंग को बढ़ावा देती है. It's a great project. A local self-help group will manage everything using CSIR CMAP's distillation technology. और इसके कृष्णा वैरायटी के शानदार नतीजे आए हैं सुपर्णा जी, जैसे 80% सिट्रल कंटेंट जो टॉप क्वालिटी का है. Exactly. And with ongoing training and support, it's going to make a real difference for those farmers. बिल्कुल, ये सस्टेनेबल आजीविका के लिए एक बेहतरीन कदम है. Those were definitely the highlights from across the labs this week. बिल्कुल, लेकिन सुपर्णा जी, आज का एपिसोड थोड़ा सा खास है. क्यों ना हम उन लोगों के बारे में भी बात करें जो पर्दे के पीछे रहकर इस पॉडकास्ट को हर हफ्ते मुमकिन बनाते हैं. I agree, Sanjay ji. Since this is our 25th episode, it's the perfect time to acknowledge the team. People hear our voices, but there are so much hard work that goes on behind the scenes every single week. Every episode starts with a simple idea. From there, it's a massive collaborative effort to turn that spark into a story that actually resonates with our listeners. जी, कभी किसी प्रयोगशाला की बड़ी उपलब्धि, कभी किसी वैज्ञानिक की कहानी, तो कभी नई तकनीक की बारीक जानकारी. हर विषय पर आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम काफी मेहनत करती है सुपर्णा जी. जी. From the initial planning and scripting to the final edits and social media outreach, every minute you hear is a reflection of the team's dedication. सुपर्णा जी, 25 एपिसोड की ये यात्रा क्या हम अकेले तय कर सकते थे? नहीं, इसमें हमारे श्रोताओं, हमारे अतिथियों और हमारे सहयोगियों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है. We truly appreciate all the encouragement,
feedback, and support you have given us throughout this journey. It's really keep us motivated. हमें पूरा भरोसा है कि आप आने वाले एपिसोड्स में भी इसी तरह से हमारा साथ देंगे। Thank you so much for celebrating this milestone with us. फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। For more updates, follow our official social media handles. This is the CSIR podcast. I'm Suparna. और मैं हूं संजय। लेते हैं विदा। Until then, goodbye. Take care. जय हिंद। CSIR, Innovation Engine of India. CSIR, भारत का नवाचार इंजन। CSIR